Good afternoon, friends. Let us continue our discussion on AS13 or investment accounting. We talked about a lot of stuff yesterday. So now it's a time to go ahead and do some number crunching. I discussed how you can use the concept of debt to manage your taxes. Not possible in each and every case. You have to ensure compliance with income tax law. I did not explain income tax law to you. I simply said under income tax law, we don't bifurcate the cum interest price into true price, that is X interest, and a accrued interest. There is no such concept there. मैंने बहुत सारी चीजें बात की है. आपको अगर उसमें से कुछ चीजें नहीं समझी होगी मार्केट के बारे में, it is okay. There is absolutely no problem. AS13 I did not discuss. I said the price of the bond is a present value of future cash flows. So we estimate the future cash flows. Actually, we know the future cash flows in case of debentures because the payments are fixed. In case of debentures, payments are fixed. Yes or no? So future payments, if you know, we just need to find a present value of those future payments at what? Expected rate of return. Whenever you do discounting or whenever you try to find a present value, it is at certain rate of return. So that rate of return can vary from person to person. Expectations of mine and expectations of madam can be different, right? So those expectations of market as a whole, I call them as YTM. I said expectations of investors as a whole are YTM. Do you understand that? How to calculate YTM? I did not explain that. I created a co-host, so chat with Abhishek Zaware, not with 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 Academy. So YTM calculations are covered in the group 2 financial management subject. We need to do the YTM or IRR calculations in the next chapter of hire purchase that we'll be doing it. But right now, no, not required. And then I gave you some core principles and I said that the debt market is there is a huge opportunity. You should take an interest and you should try to learn. But वहाँ पे भाई सब सो गए थे, फिर हम journal entries पे आ गए थे. So now let us come down to the core principle. I told you in CA exams, unless otherwise specified, record date and payment date both will be same. Both will be same. Record date देंगे ही नहीं, rather आपको सिर्फ क्या देंगे? पेमेंट डेट ही देंगे. तो प्रॉब्लम कहां पर था? ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन नहीं किया था कल, आज एक्सप्लेन कर रहा हूं. स्क्रीन आ जाएगा बच्चों, रुको, होने लगा स्क्रीन. एक्स इंटरेस्ट एंड व्हाट? कम इंटरेस्ट प्राइस. एक्स इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? नेकेड प्राइस. अरे क्या सिखाया था तुमको? ट्रू प्राइस ऑफ डिबेंचर. और बोल क्या रहे हो तुम? दिस इज ट्रू प्राइस ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर का सच में प्राइस जो होता है वो एक्स इंटरेस्ट होता है. अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो प्राइस आता है हम उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट. CUM कम मींस इंक्लूडिंग, EX मींस excluding, or your X. Foundation. Foundation is your X, right? You want to become it present? You can send the result to the ICA back again for rechecking. So X interest and कम interest price. कितने लोगों को वापस ऐसे सपना पड़ा कि फाउंडेशन पास होने के बाद सच में पास हुआ है कि नहीं? ऐसे ऐसे फीलिंग आया ऑनेस्टली? चलो, मतलब रिजल्ट लगने के बाद भी आपको फीलिंग आया कि हाँ, मतलब भाई सच में पास हुआ कि नहीं? सपना पड़ गया, रिजल्ट आया कि नहीं, वापस चेक करने गए. गुड. होना चाहिए ऐसा, डर बना रहना चाहिए. ये कोर्स का डर जो है ना बना रहना चाहिए. हाँ, पेपर के बाद आया था, बहुत अच्छी बात है. ये बनने के बाद भी आता है, डरो मत. सो एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट. कंपनी पेज इंटरेस्ट for the coupon period only on the record date, which is nothing but a payment date for us, to the holder of bonds on record date, which is nothing but a payment date. So whosoever owns debentures on record date, he will get interest.
whosoever owns a debentures on record date, he will get a interest for the full period. Company doesn't consider who were the holder of the bonds throughout the coupon period. Company सोचता ही नहीं उसके बारे में. However, transactions keep on taking place throughout the period. Transaction तो रुकता नहीं है, transactions तो period by period होते रहता है. Transactions keep on taking place. If transactions keep on taking place, at what price will they take? They will take place at a price including accrued interest till the date of transactions. The price at which transactions take place is cum interest price. Buyer pays for price of the bond plus accrued interest up to that record date. Got it? So X interest price plus accrued interest is a cum interest price. We did that. On stock exchanges, whatever price you see for any bond anywhere in the entire world, not only in India, it is always a cum interest price. Once I start doing the exam questions, you will see a lot of questions with the price as X interest price. Question was that transaction happened at X interest price. Transactions never ever take place on stock exchange at X interest price. They always take place at cum interest price. In CA exams, it can be X interest, it can be cum interest. Why? How will we torture students? We will be able to torture you only if some transactions are at X, some transactions are at cum, and you lose your concentration. You lose your concentration. And आप गलती कर बैठे, you don't read it carefully. What transaction is at X interest price? What transaction is at cum interest price? और आप मारे जाते हो, कुछ नहीं कर सकते. So in exam, both will come. So X interest is a true cost or the true price of a debenture. Remember, whenever you purchase a debenture, you pay X interest plus accrued interest plus you also pay brokerage. And there are other transaction costs. In addition to X interest price, accrued interest, brokerage, STT, stamp duty, ऐसे बहुत सारे elements रहते हैं इसके अंदर, transaction के अंदर. Like whenever you do transaction, so what is the cost when you buy debentures? What is the cost to you? Cost to you is not cum interest price. Remember this. Cost to whom? You matlab buyer रे. The one who buys the debentures, what is the cost to him? X interest price. X interest price. This is a true cost to the buyer. समझा क्या? X interest price is true cost to the buyer. Plus what? Accrued interest लिखने का है और कैंसिल करने का है. Accrued interest. That accrued interest is not the cost to the buyer. You pay, but it is not a cost because you are going to get it recovered from company on the payment date. याद करो कल का example. If you were there yesterday and you were not sleeping, 1180 was amount paid by whom? Raga. याद है करे? Out of that 1180, accrued interest was 35 rupees something. अरे point छोड़ दो ना यार, छोड़ो ना please. 35 rupees was the accrued interest. So that accrued interest you are going to recover from the company. So other than that accrued interest, it is 1145. That 1145 is my true cost. क्योंकि वो 35 जो है वो मुझे वापस मिलने वाला है. If I am going to get something back, it is not my cost. या accounting का principle याद रखो. I gave you a simple example yesterday. I purchased a raw material worth 10 lakh plus 1 lakh GST on it. I paid to supplier 11 lakh, but my cost of raw material is 10 lakh. क्यों? क्योंकि वो जो 1 लाख मैंने पे किया है सप्लायर को, आई एम गोइंग टू एडजस्ट दैट 1 lakh अगेंस्ट अमाउंट of tax payable on
sales. Whatever the tax is payable on sales, I will adjust it. So does that 1 lakh form part of my cost? Answer is no. It is going to be reimbursed to me by government of India or state government, whatever the government. तो exactly जब आपने डिबेंचर खरीदा, तुमने पे किया 1145 plus you paid 35, but 35 is not your cost. 35 is not your plus what? ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ये आपकी ट्रू कॉस्ट है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट ब्रोकरेज रहेगा, जो भी कुछ रहेगा. अब ब्रोकरेज जो होता है वो कभी भी एक्स इंटरेस्ट पे नहीं आता है. ब्रोकरेज हमेशा कम इंटरेस्ट पे रहता है रियल लाइफ में. अपने सीए इंस्टीट्यूट में जो प्राइस प्रिंटेड रहेगा ना क्वेश्चन पे, उस पे हम ब्रोकरेज करेंगे. तो ये दो गलतियां हम करने वाले हैं even today. Earlier they were making even more mistakes, but they have rectified some of them because I sent email to them. So today the number of mistakes have come down, but it's चलो ओके, अपनी इंस्टीट्यूट है, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा. ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज. तो ये आपकी कॉस्ट है. आपने अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करके कैंसिल किया ना, तो ये आपकी कॉस्ट होती है. अब क्या क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है, ये कहां पे दिखता, कहां पर है? व्हेनेवर यू ट्रेड यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. क्या मिलता है तुमको? Contract note. So once you get a contract note, in the contract note all these elements are there. So how, let me show you contract note for example. Only a second. Just a second, let me add up the account. So I'll show you contract note. Add हो गया होगा. So once you trade you get what? A contract note. So summary of transactions. Now this is some transaction that I did. So यहाँ पर summary रहता है, but the contract is actually digitally signed. तो मैं यहाँ पर open करता हूँ contract note को. Attachment है उस email का. Can you see? I hope you will not be able to see the password. Apple is that intelligent? Yes. Let me enter the password. So this is a trade. Understand? Transaction cost क्या होता है? अब एग्जाम में कभी नहीं आएगा, सवाल ही नहीं आता. So this is a cash market. There are different segments of market. तो हर एक segment, ये cash segment है, future segment रहता है, और debt segment रहता है, currency segment रहता है, ऐसे अलग अलग segment रहता है. Do you understand that? तो Edelweiss है, उसने बोला trading account number, PAN number, something something. So this is important now. From after 2-3 days, India is going to have a landmark transition. So far you could have learned in India there is a T+2 system. India is now progressing to T+1 in the next few days. So T is trade date. मैंने trade कब किया था? When did I do this trade? 21st of February 2022. That is day before yesterday. I did the trade. I do the trade on that date. It doesn't mean the shares or debentures come to my account immediately. They come to my account on a settlement date. Trade is settled within 2 days as of now. So 2 working days. 21 plus 2, 23. How intelligent you are. So that is settlement date, 23rd February 2022. So these shares will come. So ये trade है. I place one order. Order ID एक रहेगा, लेकिन multiple trades will be executed. So okay, there are multiple orders that I might have placed. So I placed two orders I had placed for HDFC Bank. So HDFC Bank का order number है और अलग अलग trades हो गए. I wanted to buy 1000 shares of HDFC Bank. So I placed an order for 1000 shares of HDFC Bank. They were traded multiple times. अब बोले why multiple times? मेरे को 1000 खरीदने थे, लेकिन सेल करने के लिए 1000 at a time नहीं रहेंगे. So I got what?
20 shares from somebody I don't know at 1525, 10 shares at 1525, 2 shares, 11 shares, 1 shares, like this. Total I got what? 1000 shares है ना. उसके ऊपर ब्रोकरेज, आप बोलेंगे ब्रोकरेज सब जगह जीरो लग गया तुमको. हाँ, 1 पैसे का ब्रोकरेज लगा है मुझे. दैट इज बेसिकली बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ brokerage plan. It's an arrangement with the broker. I don't pay brokerage in percentage terms. CA course is percentage. अपने कोर्स में आएगा 0.1%, 0.5%, 2%. परसेंटेज का जमाना जा चुका है. जो इलिटरेट लोग होते हैं अभी भी परसेंटेज में पे करते हैं. ब्रोकरेज इज गॉन इन परसेंटेज टर्म्स बिकॉज ब्रोकर हैज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ टर्मिनल. ब्रोकर के साथ आप निगोशिएट करके यू कैन से भाई मैं 5 करोड़ का ट्रेड करूं या 5 लाख का ट्रेड करूं या 5 रुपए का ट्रेड करूं. आई वांट अ fixed brokerage. So I have got a brokerage of 1 paisa. 1 paisa irrespective of the value of the shares. That is your negotiation with the broker. अब उसके ऊपर का STT कितना STT लगा रहा है मेरे को? 1525. STT is a tax, security transaction tax. It is a transaction cost. ये मेरा cost है. This is the cost of investment. Total, so 1000 shares into 1525. Take on your calculator. 1000 shares into 1525. कुछ shares मुझे थोड़ा 10 पैसे सस्ते में मिले, but it's okay. 1 लाख नहीं मैडम, 15 लाख आएगा. प्लस STT 1525.3 should be 15,24,950. नहीं, बिफोर लेवीज है ये, बिफोर STT लिखा है उसका नीचे आएगा. ठीक है, जो भी आगे आपके कैलकुलेटर में प्लस STT ऐड किया ना आपने ऑलरेडी. प्लस ICICI बैंक आई बॉट. ICICI बैंक इज 1000 shares into 758. So you take up 7,58,700. 758,700 plus STT on that 758.7 is STT. Should be STT add हो चुका है ऑलरेडी. प्लस स्टैम्प ड्यूटी पे किया मैंने. कितना स्टैम्प ड्यूटी पे किया रे? 343 प्लस 343 स्टैम्प ड्यूटी प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 78.79 प्लस सेबी को पैसा गया 2 रुपीज 28 पैसा. उसके ऊपर का GST लग गया 7.3. SGST plus CGST 7.3 is equal to, you should have got 2286,371 approx. नहीं 420. ठीक है ना, क्योंकि कुछ शेयर्स क्या हुए थे, HDFC के कुछ शेयर्स 10 पैसे सस्ते मिले थे मेरे को. If you see, there is some difference ना. हमने we assume the rate as 1525, but the rate was not 1525. Rate was 1524.9. Here it was 758.7. That's okay na. What is my cost? Now here this was equity shares. There is nothing called as accrued interest. Shares के केस में interest नहीं होता, मालूम है ना. Interest is in case of only debentures. There is no concept of interest. For what? तो shares के केस में मेरा cost क्या है? Price plus transaction cost. तो debentures के केस में the price of debenture is known as the X interest price. जो इंटरेस्ट तुमने पे किया है वो तुम्हारी कॉस्ट नहीं है. वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा. आज एक सम लेके प्रूव करके दिखाता हूं तुमको. प्लस व्हाट? ट्रांजैक्शन कॉस्ट. इफ आई हैव टू ट्रेड इन द डिबेंचर्स, लेट मी ट्रेड. एक चिल्लर अमाउंट का डिबेंचर खरीद लेते हैं. आई गो टू माय ब्रोकर्स एप्लीकेशन. व्हाट इज इट? I hope I remember the password. So I logged in into my broker. My broker account, bank account, demat account, all things are already linked. So you should have them linked. I search. Now in India, debt का कोई सोचता ही नहीं है. I have seen no broker who shows debt as a separate category. देखो यहाँ पर. You want to buy debentures ना? Debentures को लिस्ट में है ही नहीं. फिर आप बोलेंगे सर डिबेंचर्स मतलब है नहीं स्टॉक है. उसको इक्विटी के अंदर ही लिखते. क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स इतने कम कंपनीज के ट्रेड होते हैं इंडिया के अंदर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज दैट ब्लडी नोबडी केयर्स टू क्लासिफाई देम सेपरेटली. बट दिस इज सिचुएशन एज ऑन टुडे. दिस वोंट बी द सिचुएशन 15 years 20 years डाउन द लाइन इफ इंडिया डेवलप्स. अच्छे दिन जब आएंगे
जब कभी भी आएंगे तब सिचुएशन बदला हुआ रहेगा। तो मैं अभी आरईसी के बॉन्ड्स पे सर्च करता हूं, सो आई सर्च आरईसी। आरईसी का शेयर्स दिख रहा है ये जो, तो नहीं दिख रहा है इधर। एनएचआई सर्च करते हैं, आई सर्च एनएचआई, हाँ मिल गया। देखो कल हमने एक बॉन्ड सर्च किया था एनएचआई N2, याद है क्या? तो वो बॉन्ड का देखो नाम कैसे घटिया तरीके से लिखा है, क्या लिखा है देखो उसने, 830 NHAML, मतलब इट इज नथिंग बट एनएचआई बॉन्ड। 8.3% is a coupon rate, ML may be the series or something, तो जीरो। जीरो मतलब अभी तक उसका कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है। डेप्थ में देखो तो जीरो जीरो रहेगा। डेप्थ इज नो बायर इज देयर इन द मार्केट, नो सेलर इज देयर इन द मार्केट, डिबेंचर्स आर लिस्टेड, सो आई हैव टू सर्च फॉर समथिंग एल्स। डेप्थ मतलब बायर सेलर कोई है ही नहीं मार्केट में। आप बोलेंगे क्यों? नहीं, अपने कंट्री को अभी तक नहीं समझा है डेट। अपने भिड़ू लोगों को इक्विटी, इंश्योरेंस, क्रिप्टो यही समझा डेट। तुम फॉरेन कंट्रीज में जाके देखोगे तो देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस फंड्स। इन फाइना इन FM आई टोल्ड यू अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईटी मनी जीनियस, अगर आपको याद होगा तो। ईटी मनी का जीनियस करके एक प्रोडक्ट था। तो इन फॉरेन कंट्रीज देयर इज allocation with reference to your age. As you become older and older, your allocation to equity should come down and your allocation to debt should increase. It took bloody 14 years for Dr. Manmohan Singh to introduce a law in our country to do the management like this. There is an authority, in case your parents work in government companies or government itself, they'll have a pension account called as a NPS, New Pension Scheme. This was created, एक इंडिया में एक बॉडी क्रिएट हुआ है, प्रोविडेंट फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, विच नाउ मैनेजेस द इन्वेस्टमेंट्स। तो वो क्या करते हैं, आपके एज के हिसाब से अलोकेशन करते हैं। वॉट एवर सेविंग्स यू डू फॉर योर रिटायरमेंट, if you are young, let's say you are 30-year old, you can invest a lot of money in equity because ability to take a risk is higher at the age of 30. Or at the age of 55, your ability to take a risk is lesser because you are going to retire at the age of 60. The balance number of working years are just 5. Equity gives a return only when it is invested for a extreme long term, 10 years plus. अगर आपको याद होगा FM के अंदर मैंने आपको एक्चुअल डेटा पे कैलकुलेशन करके दिखाया था, if you remain invested for 10 year plus, you invest on any damn day, you don't go in a loss. In 100% situations you make a profit. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक्चुअल डेटा पे कैलकुलेट करके दिखाया था। तो बॉन्ड का अपने कंट्री के अंदर डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म ही नहीं है उतना ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज पब्लिक ऑफ आवर कंट्री हैज नॉट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट्स। इवन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा बॉन्ड देखता हूँ, वो भी नहीं ट्रेड हो रहा है, डेप्थ ही नहीं है। अरे कुछ तो खरीदना है यार मुझे। है बॉन्ड उसका, रिलायंस पेट्रोलियम का बॉन्ड है। बोलना बेटा क्या नाम है बॉन्ड का। जितना मेरे को याद है ना, रिलायंस पेट्रोलियम का बहुत पहले ही मर्जर हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, और वो कंपनी भी रही ही नहीं है। कौन थे पेट्रोलियम वाले भाई साहब? नमस्ते। सो लेट मी सर्च सम अदर कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC। इनके नाम क्या रहेंगे? PFC का इक्विटी शेयर है, दिस इज नॉट बॉन्ड, दिस इज इक्विटी शेयर। आई वांट टू बाय बॉन्ड, बॉन्ड और कौन रहेगा, लेकिन इनके नाम जो है ना ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेट मी, दूसरा एक तरीका रहता है और एक, इफ यू वांट टू सी हाउ द ट्रेड हैपेंस एक्चुअली, तो आपको समझ में आएगा कि हम जो सिलेबस में करने वाले उसमें थोड़ी बहुत गलतियां है। NHI वाला कल का जो है ना, आई सर्च, आज उसका ट्रेडिंग हुआ है कि नहीं मालूम नहीं। लेट मी कॉपी ISIN का सिक्योरिटी नंबर मैं कॉपी करता हूं और यहां पर सर्च करने की कोशिश करता हूं। अच्छा वही सर्च किया था ना हमने पहले, का ट्रेड ही नहीं है इसके पास। मैं आपको साइन, अरे ओके बाबा, क्या दिखाऊं आपको, कौन से कम, इट्स वेरी टफ टू फाइंड द डिबेंचर्स व्हिच आर लिस्टेड नाउ।
and which are traded onto the, जिसके लिए seller है market में. If I want to buy just one debentures. Yeah. Let me give it one more try for some. ये भी NHI का नहीं था ना, अभी बहुत मुश्किल है यार. Finding debentures. इधर NSE की वेबसाइट पे दिखा रहा है ईडलवाइस माती खा रहा है इधर. ईडलवाइस इज कंज्यूमिंग माती. Search it. Let me go for trading. Let me place order one quantity at 1200 rupees. ऐसे डाल के देखते क्या होता है, देखते. Something went wrong. Trading symbol does not exist for the exchange. No. I can't show you. So you just imagine. ऐसा होता है. ब्रिटानिया N2. ब्रिटानिया है क्या? यहाँ पर होना चाहिए ना यार. यहाँ पर एक ही ब्रिटानिया दिख रहा है. That is equity shares of Britannia. These brokers have some different name. ब्रिटानिया का नाम दिया उसने INE14 8 I इंडिया बुल्स दिखा रहा है. ये इक्विटी शेयर है बेटा इंडिया बुल्स के. वो भी कोई है, कौन है? क्षितिजा. These are equity shares of India Bulls. I want to show you debentures. I can't. NHI is trading on another program. Which one? Upstock I don't have. $5. Let me try $5. $5 में ट्राई करके देखो. दिस क्यों? अरे कंट्री है यार ऐसा भी, क्या करें? सब जगह पे मिलना चाहिए ना. हाँ यहाँ पर NHI है. Okay, on phone I am able to get $5. So let me show you. Let me connect a phone. ये फोन कनेक्ट नहीं होगा शायद. तुम्हारा नसीब खराब है. Let me. Phone is, Apple TV is not showing a phone. Let me stop this mirroring. $5 यहाँ पर. Screen mirroring itself is not working on the phone. अच्छा, वो Zoom जब चालू रहता है. Zoom public, I am disconnecting co-host. I'm leaving the meeting from here. So as soon as I leave the meeting from here, this mirroring will start. I understand now. Yes, it starts. Oh, Zoom blocks it. This is problem with Zoom. Now I open $5. Can you see? This is another broker. So I go to this broker. This is one of the worst interface broker. The broker who has pathetic interface in his app. So I have invested through this broker 10 rupees 50 paisa so far. So my investment is 10 rupees 50 paisa here. I search for what? NHAI. तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिख गए यहाँ पर. मिल गया क्या आपको? तो देखो कितना पागलपन अपने कंट्री में हो सकता है ब्रोकर का. वॉल्यूम is shown in rupees. Can you see here? Volume means quantity. Quantity is shown in rupees. मतलब तुम्हारे जैसा ही कोई तो वहां पर डिजाइनर होगा या रिव्यू करने वाला आदमी होगा जो क्वांटिटी को रुपीस में लिख रहा है. बट चलो छोड़ दो, अभी एटलीस्ट दिखा तो रहा है. सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस. अभी वो यहाँ पे दिखाएगा. ये डिमांड सप्लाई है उसका. मार्केट डेप्थ. डेप्थ देखो. कैन यू सी द डेप्थ? I can't zoom. Market depth matlab bid order and ask order. So there are multiple bid orders, buy orders, bid. So how much is the total quantity? 682.
What is the ask quantity? 189. So there are buyers for 682 debentures. There are sellers for 189 debentures quantity terms में. तो यहाँ पर आपको उसका जितना पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकता है उतना मिलेगा. सिग्नल कोई काम के टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं. दिस इज नथिंग टू डू विद द बॉन्ड्स. आई वांट टू बाय नाउ. तो बॉटम में लिखा है बाय. तो अभी देखो बाय करना है अपने को. ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए ना. अब देखो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा. आई कांट जूम यार. इसको दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हियर आई कांट जूम. इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस. यू कैन जूम और आई डोंट नो. देखो यहाँ पर सेल वाला ऑर्डर देखो. सबसे अच्छा सेलर क्या रेट पे बैठा है? सेलर इज एट द रेट ऑफ 1216. कैन यू सी 1216? So seller says he is willing to sell 10 debentures at 1216. Buyer is there who is willing to buy 10 debentures but at 1210. Buyer is there at 1210. That's why transaction is not taking place. The price is not matching ना. Price must match. तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ. मैं यहाँ पे 1213 टाइप करता हूँ. I want to buy 1 debenture at the rate of 1213. This is limit order. I'm specifying the maximum price which I'm willing to pay. 1213. That's why I can specify price. If I click on market price, I will not be able to enter the price. There are two types of orders, limit order and market order. मैंने आपको practical knowledge के capsules दिए थे. तुम्हारे पूरे बैच में मेरे को लगता है सिर्फ 5 या 6 बच्चों ने देखे हैं. क्योंकि मैंने जब आपको शेयर किया था आपके टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत पहले छुट्टियों में जब आप फाउंडेशन पास नहीं हुए थे तो देखी नहीं हमने सर. स्क्रीन गायब हो गया. डरो मत. उसमें हमने लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर क्या है एक्सप्लेन किया था. तो लिमिट ऑर्डर आई एम स्पेसिफाइंग अ प्राइस. आई क्लिक ऑन बाय. अच्छा हो जाएगा क्योंकि प्राइस नीचे आ गया. देखो गया ऊपर. आई क्लिक ऑन बाय. तो एक कंफर्मेशन का स्क्रीन आ गया. क्लाइंट कोड मेरा कोड है वो सब कुछ है. प्लेस बाय ऑर्डर. ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली. सो आई कैन गो टू द बुक. नीचे बुक था. पेंडिंग क्वांटिटी 1/1. दिख रहा क्या? और so far it is not fulfilled. Order is not fulfilled. क्यों? मैं खरीदने को तैयार हूँ 1213 और लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है 1215. मोर देन द प्राइस व्हाट इज रिलेवेंट. 1210 आके गया. ये ब्रोकर तो बेवड़ा है मतलब. नहीं दिस इज ब्लंडर. देखो 1210 आके गया एंड आई एम विलिंग टू बाय एट 1213. वो इसका एरर है पक्का. तो हियर जस्ट अ सेकंड. इट्स अ एरर इन हिज एप्लीकेशन. एक्चुअल में प्राइस चल रहा है 1225 बट बाय मिस्टेक ही इज शोइंग 1210. लास्ट ट्रेड हो चुका है 1225 पे लेकिन मैंने प्राइस डाला है 1213. सेलर वहां पर 1216 पे था. If you remember, seller कहाँ पे था 1216. Now let me modify the order and change the price to what 1216 and I click on modify. Confirm. Your order has been placed. हो गया. Can you see what is it? Fully executed. मतलब एक डिबेंचर आ गया मेरे को. आ गया मतलब मेरे डीमैट अकाउंट में आने के लिए 2 दिन लगेंगे. आज क्या है वेडनेसडे. So Thursday, Friday I will get the debentures in my account. What was 1216 बच्चों? कौन सा प्राइस है 1216? I can't hear. 1216 is a come interest price. Do you understand? That's the price that I paid. Now when out of 1216 I have already paid something. In 1216 I have paid something which is nothing but called as what? Accrued interest. From which date? Last interest payment date till today. आज तक का इंटरेस्ट जो भी अक्रूड है since last interest payment date I have already paid. Paid to whom? Seller. Who is the seller? You don't even know. The stock exchanges whenever you trade you don't know the counterparty. क्या शादी कर रहे हैं क्या मुझसे? Why do you need to know also? You don't need to know. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1216 में से जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसको हटाओ. आपको मिलेगा क्या?
X interest price. This is how X interest price you get in real life. In exam life, you know what 𝐼𝐶 will do? 𝐼𝐶 will directly give you X interest price. From where? God only knows. Ukraine urges citizens to leave Russia immediately. This is madness. In case war happens, it will be big opportunity to buy the shares. Obviously यार, जो पैसा तुम कमा सकते हो नहीं है वॉर के बाद. I actually expect the war to happen. अपने यहाँ कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सी अभी तो हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं है. जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, 2 हुआ था, हम अपने लोग वहां पे जाके लड़े थे. अब ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है. मोदी जी तो किसी को भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं आता. सवाल ही नहीं आता. Modi is very diplomatic. He's not talking anything. See, except India, every country has given a statement on Russia and Ukraine. India is silent. Why? अरे उत्तर प्रदेश की इलेक्शन है उधर. तुम उधर यूक्रेन कर रहा है, इधर अपना उत्तर प्रदेश का योगी को लाना है, उधर चालू है. तुम क्या यूक्रेन कर रहे हो? उधर अपने पुणे महानगर पालिका की इलेक्शन बाकी है और तुम बात करते हो यार यूक्रेन की. So India is not at all concerned. India will be affected by only one thing, that is crude oil price. But that will be temporary shift, increase in the crude oil price. It is not going to be something very permanent. It is not permanent. वॉर हो गया, मार्केट चलो थोड़ा गिर सकता है, अच्छा खासा गिर सकता है. किसकी वजह से? जो फिरंगी इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड है वो क्या करेंगे? पैसा बाहर निकालेंगे. इट डज नॉट अफेक्ट इंडियाज फंडामेंटल्स और फंडामेंटल्स ऑफ मेनी कंपनीज इन इंडिया. एक सिंपल एग्जांपल, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर. उनका कॉफी पीना छोड़ दोगे तुम? ब्रू, इफ यू आर अ कंज्यूमर ऑफ ब्रू, विल यू गिव अप? यार वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन में, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा आज. शैम्पू सोप यूज करना बंद करोगे? So it is not going to affect the quantity of sales or anything at all. So there are so many companies who are not going to be affected. So like you want to buy, let me check out. Yes, TCS is falling today. If TCS falls even further, blindly go and buy TCS. After you wait for that war, because war के बाद और बहुत गिरेगा obviously. क्यों? Because there is some public which will be scared because of war or something like this. TCS को घंटा फर्क पड़ेगा इस वॉर से. क्यों? सॉफ्ट वॉर आ गया तो क्या सॉफ्टवेयर? अभी नहीं, सब काम छाम छोड़ दे के साथ बैठे. वॉर ऐसा थोड़ी होने वाला है यार जिंदगी में. बट फियर, ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, उसको रैशनैलिटी हर बार लगाना नहीं आता है. तो बहुत सारे लोग जो है स्टॉक्स क्या करते रहेंगे? बेचते रहेंगे. TCS का मैनेजमेंट, टाटा सन्स, इज सेइंग वी वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ TCS एट 4,500, not 400, 4,500, and TCS is right now trading in the market at 3,572. Tata Sons is willing to buy 4,500 rupees per share. For how much amount? 18,000 crore rupees is what Tata Sons want to buy shares of TCS. They want to invest in TCS 18,000 crore kind of. They are willing to buy back, but they are पब्लिक अपना अरे वॉर चालू है. नहीं, वो टाटा को मालूम है ना कि उसका रशिया में कोई एक्सपोजर नहीं है. TCS gets a peanut of revenue from Russia. Out of the total revenue, TCS gets a less than 0.5% from Russia or Ukraine as such. So the probability that the Tata Sons ka profit will affected, anything will be affected, is much lesser. On the contrary, because of war, the companies which are engaged in manufacturing defense equipment, they may get more orders for war machines or other ammunition or everything, and they get more cash flows. They may try to do more modernization of technology. But public छोड़ दो. मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अभी मैंने 1216 पे डिबेंचर ट्रेड किया, वो कम इंटरेस्ट प्राइस है. रियल लाइफ में आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस पता नहीं चलता, आपको कैलकुलेट करना होता है रिवर्स वर्किंग के थ्रू. क्या रिवर्स वर्किंग करना होता है? कम इंटरेस्ट प्राइस ले लो, अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करो. एग्जाम में ऐसा होगा क्या? कभी कभी होगा, कभी कभी हम उल्टा करेंगे. एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया रहेगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे. आर यू क्लियर? इफ यू डोंट वांट बोथ द वर्ल्ड्स, आई विल वेरी हैप्पीली टेल यू ओनली वन वर्ल्ड, एग्जाम वर्ल्ड. You go in real life and get blasted.
तो ट्रू कॉस्ट पढ़ो, ट्रू कॉस्ट टू द बायर इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने दिखाया आपको, समझ गया ना। अभी आज के जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है आएंगे, कब आएंगे? आज शाम को आएंगे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नोट के फॉर्म में। 1200 रुपए के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाएगा। ब्रोकरेज शुड बी लॉजिकली ऑन कम इंटरेस्ट प्राइस, लॉजिकली। X interest price is known as clean price or naked price. Cum interest price is known as a dirty price. I already told you. Accrued interest till the date of transaction is paid by the buyer to the seller, is recovered by buyer from the company on the next record date or payment date, and hence it is not a cost to him. Are you understanding this? Interest is calculated on a face value. I have seen students calculating it on X interest value. क्यों? बाजू में वही दिया रहता है। Interest is always on. Basics of sense. Bifurcation of cum interest is not required for what purpose? Income tax. उसकी वजह से क्या होता है समझा ना कल? You can book a loss under the head capital gain, and you can create interest under the head income from other sources, and you can say that interest is exempt or tax free if it is a tax free bond. हर बॉन्ड टैक्स फ्री नहीं होता है, देयर आर सर्टन टैक्स फ्री बॉन्ड्स। तो ये ऐसा बड़े बड़े लोग या इंस्टीट्यूशंस करते हैं to manage your taxes, but you have to ensure compliance of section number 94 of Income Tax Act. There are more sections you'll learn. आ जाओ अपने काम की चीज पे। Journal entries in the books of investor. When you purchase an investment, it is simple like a purchase of machinery. What is the entry you pass for purchase of machine? Machinery account debit to bank account. है ना? Here it will be investment to bank, but I have to, whatever payment we make, we have to bifurcate amount paid into two parts: paid for investment and paid for accrued interest. Whatever we pay for accrued interest, we debit to separate account, because that we are going to recover from company. So observe what entry I am passing. Purchase of investment, investment account debit, or you can say investment in so and so company's debentures account debit, whatever name you want to give. How much will be debited? X interest price plus transaction cost. Transaction cost is cost, na? Like in case of machinery, installation cost. याद है क्या रे? 11 standard, 12 standard. Interest on investment account debit, accrued interest. ये entry हमने कल भी किया था. To what? Bank account. So you purchase a debenture from Raga at 1180, or let's take my example right now. What was the price I paid? What was the cum interest price that I paid? 1216. 1216 I paid. I'll create a co-host because I can't see there. तो किसी को डाउट है तो यहाँ पे टाइप करना बच्चों. Just a second. Let me create a co-host again. तो आपको वहां पर चैट करने का ऑप्शन आता है, अगर आपको चैट करना है तो फ्री में रहता है चैट. तो 1216 is what? 1216 is my cum interest price. To that I add transaction cost. For example, let us say मेरा transaction cost आ गया 20 रुपये. Brokerage plus STT plus stamp duty. I don't know how much it will. भाई पैसा मैंने कभी अकाउंट खोला था, मेरे को लगा था अच्छा रहेगा, बाद में समझा ये घटिया है, लेवल नहीं उसका. So but 5 paisa is extremely popular with general public in our country. क्यों नहीं ना? उनको परख नहीं है ना क्वालिटी की. In India, I have seen quality people, very few people understand quality. 1236. What is 1236? Total paid by me. है ना? Total paid. I paid 1216 to the person who sold me the debenture and I incurred transaction cost. Now ये 1236 जो होता है ना, उसके दो बच्चे आपको करने होते हैं. कौन से दो बच्चे? X interest plus and transaction cost. And accrued. Now remember,
अक्रूड इंटरेस्ट किसमें छुपा हुआ है? 1216. अज्यूम करो अक्रूड इंटरेस्ट इज 50 रुपीज. अज्यूम फॉर द सेक ऑफ calculations this is 50. So that 50 is not my cost. 50 is not my cost. What will be my cost? 1216 minus 50. 1166. 1166 is my cost plus transaction cost is also my cost. It is incidental cost to acquire the debentures or investment. 1166 plus 20, it is 1186. 1186 plus 50 has to be 1236. So whatever amount you pay, you should bifurcate that amount properly. Towards what? How much you paid towards debentures? I paid 1216, but in that also I paid 50 rupees towards accrued interest. So my investment account will be debited by 1186. आप बोलेंगे सर 50 तुमने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने बोला अज्यूम. तो एंट्री क्या होगी 50 के लिए? अच्छा, ये पूरे ट्रांजैक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1186, accrued interest account debit or interest on investment account debit. Interest on investment is easy. Interest on investment account debit 50 to what? बैंक अकाउंट 1236. आप बोलेंगे सर बैंक से कहां से चला गया आपका? अरे बैंक से नहीं चला गया, रियल लाइफ में बैंक नहीं होता है, रियल लाइफ में टू ब्रोकर अकाउंट होता है. वी शो 1236 पेएबल टू ब्रोकर एंड देन आई पास एंट्री ब्रोकर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कुछ समझा गया? बट सीए एग्जाम में ब्रोकर अभी तक नहीं आया. 1950 बैंक करते हैं बैंक. ओके, so to bank come interest price plus transaction cost I paid. So instead of bank it could be broker. That does not make it. Principle क्या है? Your cost is not equal to come interest price. Your cost is equal to x interest price plus transaction cost if transaction cost is given. So if you have sense, when you purchase a debentures or investment, you pay brokerage. Brokerage is added to the cost. When you sell the debenture, brokerage will be deducted and then you will get the money. अब मैंने डिबेंचर कितने में खरीदा रे? आई कांट हियर. कितना आवाज ही नहीं यार तुम लोगों का. सोते हुए लोगों को जरा उठाओ ना. 1216. अभी जिससे मैंने खरीदा, किससे खरीदा मैंने? इनविजिबल पर्सन है कोई तो. डू वी नो दैट पर्सन? लेट अस इमेजिन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम राइटिंग दैट इन blue color. I'm writing that in blue color. What is the come interest price for him? Come interest price for him also is 1216, right? Transaction cost उसका भी कुछ तो रहेगा. 20 रुपया की जगह पे let us assume his transaction cost is 15 rupees. अब बोलेंगे क्यों? His brokerage rate might be different ना? Brokerage rate is not decided by law. It is person to person agreement of a person with his broker. So listen to this. I say brokerage is कितना है? Brokerage or transaction cost are 15. Do you understand? And I say accrued interest. Accrued interest has to be 50. It cannot be different for me and him. Accrued interest for buyer and accrued interest for seller for a same transaction is same. Interest accrued from previous payment date till date of transaction. How much was it? 50. अब सोचो, how much money will the seller get? Seller will get 1216 minus 15. मानव मन सुखानी. सुधरेगा नहीं रे तू. कल हो गया डाउट पूछना यार. मतलब कितने बेवड़े हैं रे तुम लोग. कल ही तेरे को झाड़ा था मैंने और कल तू ही सॉरी बोला था. I said doubt you should not interrupt in between. कि भाई साहब ने ऐड किया. पुणे ऐड करने वाला लवेश अरोरा. क्या किया उसने? कुछ नहीं, दिमाग नहीं. परचेस सेल कुछ नहीं. 1216 प्लस 15 प्लस 50 तीनों का टोटल 1251. अरे
लविश, थोड़ा सा इंतजार कर, सेल के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस होता है। और कैसे, मतलब प्लस माइनस सिखाओ तुम लोगों का भी। 1216 इज सेलिंग प्राइस एट कम इंटरेस्ट बेसिस, राइट? उसमें ब्रोकरेज कितना छुपा हुआ है? 15 का ब्रोकरेज छुपा हुआ है, वो 15 पहले माइनस होगा, है ना? तो 1201, दिस इज रिसिट फॉर whom? This is receipt for seller. This is receipt for, in this receipt he has received towards debentures something and towards accrued interest something. How much he has received towards accrued interest? 50. How much is towards debenture? 1151. Have you understood 1151? 1151 is a receipt to the seller towards debentures, but cost to the buyer was not 1151. Cost to the buyer was 1186. अब बोलेंगे फर्क क्यों? अरे फर्क रहता है बिकॉज सेलर के लिए ब्रोकरेज माइनस होता है, बायर के लिए ब्रोकरेज ऐड होता है। तो डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट अ कॉस्ट टू द बायर इज नथिंग बट अ रिसीट ऑफ द सेलर। ये लॉजिक नहीं लगाने का, डिफरेंस है दोनों में। जब ब्रोकरेज होता है तभी डिफरेंस आएगा। इफ देयर इज नो ब्रोकरेज, व्हाट आर द कॉस्ट टू द बायर? 1186, economic calculator, 1186 minus 1151 should be equal to brokerage of both. कितना है? 35। 35 is a transaction cost। देखो ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बायर के केस में 20 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, सेलर के केस में 15 रुपीज आई सेड। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ब्रोकरेज इज एडेड व्हेन यू मेक अ परचेस एंड ब्रोकरेज इज डिडक्टेड व्हेन यू मेक अ, अब ये बहुत बेसिक है लेकिन अभी तुम लोगों को देखने के बाद मेरे को लग रहा है लिख के देने का। देखो हेडलाइन, बेसिक्स ऑफ सेंस, ऐसा टाइटल लिखो, बेसिक्स ऑफ सेंस। डोंट इवन टाइप कॉमन, बेसिक्स ऑफ सेंस। बेसिक्स ऑफ सेंस। brokerage is added when we purchase a investment, brokerage is added when we purchase a investment, brokerage is deducted, brokerage is deducted when we sell a investment। ब्रोकरेज की जगह पे दूसरा कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गया तो भी यही होता है। Have you understood? So look at the entry in the books of seller. Seller will receive the money, right? So he will pass an entry, bank account debit, bank account debit. How much he received? 1201. Bank account debit 1201. 2. Investment account 1151. We don't say debenture account, we use the word investment account। देखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या रेशियो होगा? कम इंटरेस्ट प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेस करके आपको पैसा मिलेगा। 2. इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्स इंटरेस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ परचेस, एक्स इंटरेस्ट लेस। अभी लेस का लॉजिक समझा ना यार? कॉमन सेंस है यार। सेल करते टाइम पे तुमको ब्रोकरेज ऐड करके, मतलब ब्रोकर, तुमने बेचा फ्लैट, बेचा तुमने 5 लाख को ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर तुमको 5 लाख नहीं देता, 5 लाख 25,000 देता है। 25,000 खुद की चैरिटी, ये ले तेरे लिए रख। So X interest less transaction cost, 2 interest on investment, accrued interest. Interest at the time of sell is income, that's why it is credited. And at the time of purchase, I debited interest. क्यों डेबिट किया मैंने? Because I paid for that interest.
At the time of purchase, you pay accrued interest till the date of transaction. At the time of sale, you receive accrued interest till the date of transaction. Understood? And difference between this purchase price, this sale price is your profit or loss. If the sale price is more than the cost price, it will be profit. It could be profit, it could be loss. So profit oblique loss on sale. If there is a profit, investment account debit to profit on sale of an investment. Investment account debit to what? Profit on the sale of an investment. If there is a loss on the sale of an investment account debit to investment. Same thing like machinery. So entries are quite easy. Where is the challenge? You have to be very, very careful about transaction. Whether the examiner gives you transaction at X interest price or कम interest price, brokerage add करना है, minus करना है. रियलिटी में सबके सब ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट पर रहेंगे, बट एग्जाम में कुछ भी हो सकता है. वो पढ़ना पड़ेगा तुमको. वो इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शंस भी समझने पड़ेंगे. When you receive the interest on record date, what entry will you pass for receipt of interest? Bank account debit to interest account or interest on investment account. Profit loss can be calculated either on FIFO method or weighted average method. आप बोलेंगे ये क्या है? It may happen that you have purchased debentures of the same company multiple times. I purchased some debentures in January. I purchased again some debentures in April. I purchased some debentures again in August. I have total 1,000 debentures. But now when I go to sell, I have sold only 300 debentures. I have sold only 300. How many debentures I had? 1,000 I had. Out of 1,000, how much I have sold? 300. Now question arises, this 300 is out of which debentures? Whether out of the first purchase or second purchase or third purchase. कौन से purchase में से debenture बेचा तुमने? Which one? Which one? Nobody knows. Nobody knows because debenture ऐसा कोई हाँ ये all ला के रखो इधर debenture. All the debentures come in your demat account. So question कुछ ऐसा है देखो. Observe what I am writing. Simple common sense है. John 100 debentures purchase at the rate of 1125 per debenture. This was your cost of debenture. 1125 was a cost of debenture. Cost of debenture means X interest price plus transaction cost. अप्रैल के अंदर तुमने वापस खरीदा था 500 डिबेंचर. These are all purchase के details, हाँ? At the rate of 1180 per debenture. और आपने खरीदे थे, कब खरीदे? और अगस्त. अगस्त में कितने खरीदे तुमने? 400 debentures you bought at the rate of 1070 per debenture. These are all purchase. And now I am saying October 300 sold at the rate of 1130 per debenture. Obviously, this is sell. Compute profit oblique loss under FIFO and weighted average cost. FIFO and weighted average you did in the foundation. कहाँ पर किया तेरे? Inventory valuation. What does the word FIFO mean? So intelligent. First in, first out. So what is the assumption of FIFO? Debentures purchase first or investment purchase first is assumed to be sold first. Assumed to be sold first, that's okay. Whatever you purchase first is assumed to be sold first. Do you get that? Yes, no? So if I am following FIFO method, these 300 debentures are deemed to be sold. हम assume करेंगे ये 300 किस में से बेचे हैं? 100 out of Jan, 200 out of April. So
How do you calculate profit loss? Sell value minus cost. Response. So sell value minus cost is what? Profit. So what is the sell value? Sell value कितना है बच्चों? 1130. अरे क्या घटिया लोग हो यार. 1130 into 300, 3,39,000 is your sell value. Less cost. Less what? Cost. हाँ ना. Cost कैसे निकालेंगे अभी? Which method I am following? FIFO. What is a FIFO? First in, first out. Debentures purchased first are deemed to be sold first. हाँ ना. So cost will be 100 at the rate of 1125 plus 200 at the rate of 1180 is equal to, I don't know, 3,48,500. Oh, mummy, I have lost 9,000. समझा ना रे? This problem arises only when you had purchased the debentures on different dates. On different dates. And different rate. Date से अलावा rate important है. Date irrelevant है. अगर आपने डिबेंचर्स अलग अलग रेट पे खरीदे, सबके सब एक रेट पे खरीदे, तो क्या कुछ भी कर लो ना यार, फीफो करो या वेटेड एवरेज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर को. अभी भाई वेटेड एवरेज करेगा तो आंसर को फर्क पड़ेगा क्या? चले सेल वैल्यू चेंज होगा करे? सेल वैल्यू विल रिमेन सेम. दीज आर नॉट मेथड्स फॉर सेल वैल्यू, दीज आर मेथड्स फॉर असर्टनिंग कॉस्ट. FIFO and weighted average, they tell you how to ascertain the cost. So tell me, cost कैसे ascertain करूंगा मैं? Weighted average. Now, you know what students do? Typical. इतने घटिया होते हैं ना, मतलब 1125 plus 1180 plus 1070 divided by 3 into 300. ऐसा पकड़ के मारूंगा ना बच्चों में. This is simple average. This was there in the foundation. Simple average and weighted average. Divided by n is simple average. अरे समझता है ना रे? किसी को नहीं समझता तो मैं weighted average भी सिखाऊं क्या? Weighted average कैसा आएगा? Quantity into rate. उसका summation ले लो. Memory plus use करना है. Memory clear करो पहले. मेरी है तो 100 into 1125 memory plus 500 into 1180 memory plus 400 into 1070 memory plus. तीनों का टोटल ले लो. मेमोरी रिकॉल 11,30,500. 11,30,000. This is for how much quantity total? 1,000 quantity into your sold 300 quantity. Your sold 300 quantity. 3,39,150. So under this method, your loss is just 150. If you follow weighted average method, your loss is 150. It's okay. Hey, loss 150 ka. Please remember, under both the methods, total profit loss is same over the multiple years. Year by year, there will be differences. But once all debentures are sold, your profit loss, whether you follow FIFO method or whether you follow weighted average method, has to be same. क्यों? अगर मेथड फॉलो करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है, मैं हमेशा ऐसा मेथड फॉलो करूंगा जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है. टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द इयर्स वंस ऑल द डिबेंचर्स आर सोल्ड is going to be same. It just year by year, how do you calculate, or transaction by transaction. क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा. अब बोले सर आपने LIFO क्यों नहीं लिखा सर? AS13 does not have LIFO. AS13 mentions only, to be very frank, my personal opinion is only weighted average cost. But ICI asks a question on FIFO also. That's why I have given a FIFO there. AS13, if you read the bare text on ICI's website only, it does not mention FIFO.
नहीं मेंशन करता, लेकिन एग्जाम कितने सारे क्वेश्चन दिखा तुमको फीफो के, दिखा दो, दिख रहे क्या तुमको? कहाँ पे जाते हम? आईसीआई की वेबसाइट पे गए, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं जाने का, रिसोर्सेस में जाओ। रिसोर्सेस में वहां पर रिसोर्सेस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन 1 फरवरी 2022, फिर उसके अंदर एस 13 ओपन किया मैंने, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट कैरिंग अमाउंट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस डिस्पोजल में है। देखो पैराग्राफ नंबर 22 पढ़ो, क्या लिखा है इंस्टीट्यूट में? आई से मैं मेरा बुक दिखा रहा होगा तुमको, क्या दिखा रहा हूं? पढ़ो, when disposing of a part of holding of an individual investment, एक डिबेंचर का पार्ट बेच रहा हूं मैं, अभी हमने पार्टी बेचा ना, टोटल हमारे पास कितना था? 1000, बेचा कितना? पार्ट बेचा ना, the carrying amount, that is book value, carrying amount, the amount you carry in the books of accounts is called the carrying amount, to be allocated to that part, the book value or cost to be allocated to that part should be determined or is to be determined on the basis of average, not simple average, obviously weighted average, average carrying amount of the total holding, और उसको स्टार करके 4 लिखा है, स्टार का मतलब देखो नहीं, in respect of shares, debentures and other securities held as a stock in trade. See, you can hold debenture shares instead of investment, you can hold it as a stock in trade. What is the difference between stock in trade and investment? Let me tell you difference. Stock in trade means assets held for sale. If my objective is to just to buy debenture, sell them, trade, intraday trading, और आज खरीद लो 2 दिन के बाद बेच लो. If my objective is to do trading in shares, debentures, then it becomes not a long-term investment. It becomes a trading stock. My investment is something where you buy and you hold it for earning dividend income or interest income or capital appreciation. Now, whether it is a stock in trade or investment, that you have to look at the facts of the case. If investment is held as a stock, it is not covered under AS 13. We are not discussing that. That is covered under AS 2. AS 2 क्या है? Inventory valuation. Foundation में था ना inventory valuation. In inventory valuation, FIFO is also allowed, weighted average is also allowed. So that is what institute says. In respect of shares, debentures held as a stock in trade, the cost of stock disposed is determined by applying appropriate formula. For example, FIFO average cost. These formulas are given in AS2 for valuation of inventory. Are we learning inventory right now? What are we learning? Response यार, मुझे रिस्पॉन्स नहीं तो मैं मार दूंगा तुमको को. क्या घटिया लोग यार तुम. रिस्पॉन्स. व्हाट आर वी लर्निंग? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. व्हाट इज रिटन इन पैराग्राफ 22 ऑफ AS 13 ऑफ ICAI? Average carrying, that is weighted average, right? Now if you have got a class book, let me show you latest exam questions of the same institute. यही इंस्टीट्यूट है ना. देखो अभी तुमको तुम फीफो कितने क्वेश्चन दिखाओ फीफो के ऊपर तुमको. क्या बच्चों को फर्क नहीं पड़ता? रे बच्चों को मालूम ही नहीं रहता बच्चों को. अभी तुमको ये सिखा रहा हूं मैं, तुमको भी कदर नहीं सालो. रिसेंट एग्जाम क्वेश्चंस देखने का तुमको. चलो पहला क्वेश्चन एक मिल गया मेरे को, वो वेटेड एवरेज का है. दूसरा वेटेड एवरेज का मिल गया मेरे को. अरे हाँ मिल गया ना. पेज नंबर 68 क्लास बुक, जिनके पास है क्लास बुक, नहीं है तो चुप बैठो. पेज नंबर 68 मैंने एग्जाम नंबर ईयर लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है, तुम वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3A 10 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू सी? नवंबर 2019 एग्जाम इंटरमीडिएट क्वेश्चन 3A, लास्ट लाइन पढ़ो. What is followed? FIFO method is followed. अबे तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने खुद लिखा है कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज AS 13 के अंदर. फिर FIFO पूछते क्यों हो बच्चों को? ये क्या एक क्या आपको और दिखाता हूं FIFO के ऊपर.
और मिलेंगे पक्का। एवरेज कॉस्ट जुलाई 2021 का एग्जाम है, वहां पे फीफो लिखा नहीं है अमाउंट, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे आर रिटन दिस इज सोल्ड आउट ऑफ सो एंड सो, इट्स देयर। So in exam we have to follow whatever is printed if the question is about solving a question, but if the question is about write a short note about AS13 theory question, then you have to write only weighted average। क्यों? AS13 में कहां पे लिखा है फीफो? अभी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्यों? ये चैप्टर हमने ऐसे जमाने में लिखा था जब AS13 था नहीं, दादाजी के टाइम पे। AS13 would have come up in somewhere in 1984 85 1985। ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने कब लिख के रखा है? ये पहले, जब इंस्टीट्यूट फॉर्म हुई थी तब तब दोनों थे, क्योंकि स्टैंडर्ड ही नहीं था। स्टैंडर्ड आया तो बुक कौन अपडेट करेगा? हम क्यों करें? चाहिए तो तुमको लीफो भी ले लो तुम। बोलेगा हेडलाइन, while solving questions of profit loss we have to follow method as printed in the question, we have to follow method as printed in the question, but AS13 allows only and only बोलो weighted average method into bracket paragraph 22 of AS13, para 22 of AS13, पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म पैरा, तो लिखोगे पैरागॉन। यार तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहिए यार, तुमको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को यार, डम लोग हो तुम। मैंने अब तक तुमको कितनी सारी चीजें बोली जो हम गलत करने वाले हैं, बट इट्स ओके, ऐसा नहीं कि हॉरंडस ब्लंडर्स है, छोटा सा ही ब्लंडर है, जो मेथड अलाउड नहीं उसको अलाउ किया हमने। हाँ, जिनको एसी नहीं चाहिए वहां पे जाके बैठिए, नॉन एसी जोन। एसी कैसे बंद करें यार? किसी को एसी चाहिए, किसी को एसी नहीं चाहिए, तब मैं क्या करूं? टेम्परेचर बेटा, एसी का एसी इज नॉट फॉर यू शुड बी हॉट, एसी विल नॉट मेक यू हॉट। तुम हॉट नहीं हो, मैं क्या करूं उसके लिए? टेम्परेचर बढ़ाओ, वो हीटर नहीं है, वो 24 टेम्परेचर इज 24 इज नॉर्मल टेम्परेचर। अभी वो ज्यादा कूलिंग कर रहा है, ये तू उसके डायरेक्शन में बैठा है, कैसे? तू उधर जा, साइड में बैठ जा थोड़ा, कैसे मतलब टेम्परेचर 24 के नीचे तो नहीं मतलब कर सकते ना, हीटिंग तो नहीं करेगा ना यार वो। हाँ, अभी देखो वोटिंग करके दे, हाउ मेनी वांट एसी? देख बहुत लोग है, हाउ मेनी डोंट वांट एसी? एक काम करते हैं, कल हम ये एसी चालू रखेंगे, ये एसी बंद रखेंगे, तो ऐसे आप जोन्स कर लो। दूसरा क्या और क्या कर सकते हैं? हाँ, अरे टेम्परेचर बढ़ा के नहीं चलता एसी बेटा, एसी वो बेसिक, अरे हीटर नहीं है वो, एसी है वो। एसी, हीटर और एसी का फंक्शन अलग रहता है। अभी तक करंट और मतलब अभी तक ऐसा यूनिट नहीं बना है जो एसी और हीटिंग दोनों एक साथ करे यार। तो अच्छा, वोटिंग में जूम वाले पब्लिक ने भी वोटिंग किया है, कर लो वोट कर लो। तो कुछ नहीं, आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन। ओके, नाउ ये हो गया फीफो और वेटेड एवरेज। फीफो क्या बोलता है?
cost out of earliest purchases. In case of weighted average, balance of investment account as on the date of sale you should find out. Like what we did. Weighted average में देखो ना, मैं क्या किया? Balance was 11,30,500. Cost का balance divided by 1,000. So we calculated average cost per unit or per debenture multiplied by what? 300. Now, this is something important. I just done a confusion here. Should you follow periodic version or perpetual version? Those who studied foundation conceptually properly will remember there were two methods of or two versions of FIFO and weighted average. LIFO का बात ही नहीं कर रहा यार मैं. LIFO में भी थे. Periodic means do not calculate profit loss after every transaction. Calculate profit loss after the entire period is over. Period is year, let us say. After entire year is over, you do profit loss. Perpetual means calculate profit loss after every transaction. Perpetual means continuous. Which one is more logical? Perpetual. So in exam, if nothing is given, you are supposed to follow perpetual method. Periodic hai nahi. Fortunately, institute so far has not asked periodic. Investment के लिए AS13 doesn't. You cannot calculate profit loss. नहीं, अभी हमने इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करते, जा मैं बोर हो गया, अभी नहीं करने मेरे को, ईयर खत्म होने के बाद करेंगे, ऐसा नहीं अलाउड है. After transaction is over, you calculate a profit loss immediately at that point of time. So we are going to follow what? Perpetual. After every transaction is over, we will calculate profit or loss, not after year is over. Interest, okay. Up to this, anybody has a doubt? मनसुखानी जी, आपका डाउट पहले पूछ लो, आपको प्रायोरिटी देते हैं. आपका डाउट वो पूरा चैट में ऊपर गया, आप वापस कॉपी पेस्ट कर लेना. Anyone has a doubt up to this? कॉपी नहीं हो रहा है सर. अरे ये बच्चा है ना. लेट मी स्क्रॉल अप. हाँ, मिल गया बेटा तेरा डाउट. तो डाउट, sir, suppose 50 is accrued interest and on a record date we book a loss and on a payment date we get the interest on payment date. So are we supposed to hold a debenture till payment date? No. In real life, when record date and payment date is different, you are supposed to own debentures only on record date. If you own debentures on record date, you will get a interest. Whether you own them on payment date or Mansukani ji, this I covered yesterday's question only. Where Raga had bought the debentures on 10 June. He sold it on 17 June. Record date was 15 June. I told you that he will get the interest on 30th of June. He will get interest. Sir, if investments are purchased on 27 March and sold on the 4th of April, so the accrued interest paid on purchase will be shown in the as expense in the P&L? No beta. What happens with accrued interest? आ रहा है, ये देख इधर है. Patience. Interest के साथ क्या होता है वो अभी मैं explain करूँगा अभी. So far I was talking about purchase sale. Now let me talk about interest. What if Raga sells a debentures on 14 June? He will not get interest from company. He buys on 10 June. He sells it on 14 June. He will not get interest from company, but वो 4 दिन का interest उसको मिलता है. कैसे? जब purchase किया तो तब उसने pay किया seller को, लेकिन जब sell करोगे तुम तो buyer से recover भी करोगे ना. Market is very smart. Market भगवान छे नहीं, भाव भगवान छे. भाव में सब कुछ रहता है. तो ये जो प्राइस रहता है, प्राइस के अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ रहता है. तो ये कौन थी मैडम? सानिका. हाँ, सानिका was there obviously. So Sanika, 10 June he bought the debentures, so he paid the interest to whom? Seller. Raga bought the debentures, so Raga paid the interest to seller. On 14 June when Raga sells the debentures, he will recover it from buyer. He will get the interest.
Done. The record date is not given in India to avoid people to do such things. No, 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 beta, gargate. In India, record date is given. In exams, it is not given. I did not say India में record date नहीं देते, वो वेबसाइट पे लिखते नहीं है, इसका मतलब record date होता नहीं है, ऐसा नहीं है. कंपनी इन्फॉर्म करती है डिवेंचर होल्डर्स को. Did I say in India record date is not given? I said in exams of ICAI it is not given. I don't know about other word, but if this is a condition of ICAI, don't even talk about a BCom or other courses. नहीं है, I have not seen the questions. एक दो questions में मैंने record date मैंने खुद ऐड किया है. देना चाहिए record date. तो उससे कुछ ऐसा मतलब बहुत तूफानी फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि बॉस इफ द पेमेंट डेट इज 30 जून और वॉट एवर, यू नीड सर्टन नंबर ऑफ डेज टू डू द प्लानिंग. ठीक है, नाउ लेट मी कम डाउन टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इज इट ए इनकम फॉर इन्वेस्टर और इज इट एक्सपेंस फॉर द इन्वेस्टर? अरे इन्वेस्टर के लिए इज इट ए इनकम और इज इट ए एक्सपेंडिचर? इनकम. Interest due dates. Okay, whenever you receive interest, simple चीज, एक चीज याद रखना, whenever you receive interest, simple entry you should pass, bank account debit to interest. सोचने का भी नहीं. क्यों? Interest is a income, it is received, so bank account debit what comes in and credit all incomes and. but problem आता है year ending date को. कब? देखो क्या लिखा है मैंने, interest due date or payment date and year ending date may not be same, may not coincide. मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया था. Your interest frequency is 30 June and 31st December, but your year ending date is 31st March as an investor. Am I right? अब क्या होगा? तो 3 महीने के लिए इंटरेस्ट accrued हो चुका है, but it is not due. For the 3 months, interest is accrued but not. So, interest accrued but not due is like outstanding interest. But don't call it as outstanding. Because when you use the word outstanding, it means there is a default by the company. Outstanding का मतलब क्या है? Due था, but pay नहीं किया. अब I am not saying due था but pay नहीं किया. I am saying it is accrued but not due. Accrual is day by day, but a due date is decided by contract. If you remember CA फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट बुक फाइनल अकाउंट चैप्टर में मैंने आपको 3 डेट सिखाए होंगे, ड्यू डेट, accrual date and payment date. Now यहाँ पर due date and payment date are going to be same, but accrual date is with reference to nature of transaction. Interest accrues every day, time by time, but the due date is not every day. ना क्यों? कंपनी के लिए आप सोचो ना, हर रोज का इंटरेस्ट क्या है? डेली वेजेस है क्या? तो आज लेके जाओ आज का इंटरेस्ट. So interest is paid after 6 months, but in between my year is over. So I will pass an entry, interest accrued on investment, which is nothing but my asset, to interest on investment, which is my income. And at the beginning of the next year, entry is reversed. The logic of that I will explain with the numbers only, because I'm quite sure you people do not have the brain to digest the concepts. In the subsequent accounting year, the entry is reversed. Like whatever entries you pass for outstanding interest, prepaid interest, or outstanding expense, prepaid expense, income received in advance, all entries that you pass at the end of the year are reversed at the beginning of next year. I will explain the logic of this when I take a one question. At the time of receipt of interest, we credit interest on investment account without checking the period for which interest is related to. And this is a proof. The logic यहाँ पर है. जो मैंने लिखा ना, उसका logic ये है, but ये logic आपको number के साथ ही समझेगा. Equity के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ अभी. Now let me take one question on what? Debentures, accounting of debentures in the books of investor. बहुत सारा बकबक किया अभी. आज का 3rd लेक्चर है ना, 2-2.5-3 घंटे बकबक किया इसके ऊपर. अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ. अब आपको देखो कितना आसान जाएगा. Because we have spent a lot of time
developing a brain. Now see the question. You want to take a question? Question number is something something. Question number is something and something. 10 मार्क का करने का है. चलो. आई एम डूइंग वन क्वेश्चन. पुणे सीरीज का एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं. पुणे सीरीज क्वेश्चन आई एम डूइंग ऑन FIFO मेथड चाहिए मुझे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. Okay, and I have to teach one more point relating to this. Pune 3, page number 60 of class book. Let me show you the class book also. Okay, just a second, let it load. 1022 batch है आपका. Soft copy. Accounts, class book of B1 chapter. Listen to this very carefully before we finish. There could be some new students or who were not there for the group 2. After, just a second, let me load it. ने इसको अलग से लिखा है. Introspection sheet for every chapter he has kept it. Oh shit, not this. I don't know why he has created. Observe. After every chapter is over, you are supposed to fill up the index. This index has all the problems in that particular chapter. उनका list है. So in this chapter, there are P series questions. Total 21 questions we are going to do. Exam के Q series questions है. 12 questions है. RTP के 7 questions है. MTP के 3 questions. I am going to solve P series in the class. I will not touch Q, R and M series. Q, R, M is to be solved by you. I'll give you answers of them, but obviously in a class I can't solve all the questions. So, and you will be in a position to solve all exam questions. You have doubts on that, I will take up, no problem. But all exam questions you will be able to solve. I want you to solve those questions by putting a timer. Timer means अगर 10 mark का question है, you start a timer, 18 minutes का timer set करो and you solve that question. आराम से 18 मिनट के अंदर आपका सब कुछ सॉल्व होना चाहिए. रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग मस्ट बी डन इन अ मैटर ऑफ 18 मिनट्स. हम क्लास के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस टाइमर सेट करके लगाएंगे, नॉट ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन. So you have to solve those questions and then you have to fill it up here to be recovered for revision. Yes, no लिखना है आपको. Like आपको लगता है ये question अच्छा है, no, or you can write just yes. Whatever questions you want. Notebook का page numbering आपने करना चाहिए manually. It doesn't take too much of time for doing numbering of notebook. There's one lady who had asked, I think. Yes. So it's a time consuming process. It helps. So in case anyone is extremely busy, we do provide a service of page numbering also. मतलब अगर किसी के पास टाइम ही नहीं है आपका नोटबुक का नंबरिंग करने का, बहुत बिजी है आप नोटबुक का नंबरिंग कर सकते हो. क्यों? बिकॉज इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वेयर इज इट रिटन, आप नोटबुक का नंबरिंग करो, पेज नंबरिंग. एंड इफ I personally believe you are accountable to your parents. Remember, there are only 2 relations who dare to care you. One is teacher, other is parent. अब मैं तो हर बच्चे का नोटबुक नहीं चेक कर सकता हूं, तो इसलिए checking by parent. In case you are hostelite, send a WhatsApp to the parents
of entire PDF. Let the parents check. उनको भी समझाया, मम्मी बोलती है ना तुमको फाउंडेशन में कम मार्क क्यों आया, मम्मी को बोला मम्मी ये देखिए एक चैप्टर है चेक कर ले। देखो एक 2-3 चैप्टर में मम्मी कैसे, हाँ बेटा और कुछ खाना चाहिए तो चेकिंग करवा लो। पेरेंट्स से मतलब चेकिंग मतलब बेसिकली whether you are solved it or not, parents should check. I had sent a link of the parents group to everyone. Your parents should be there on the parents group. If not, you will be also fired and your parents will also be fired. So, and if you are there on the parents group, you have to prove that you are a parent. And that will become complicated. So, आपको इधर सिग्नेचर करना है और ये साइन यहां पे करना है, और ये सब कुछ करने के बाद आपको इसका पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ बनाना है और वो अपलोड करना है, वो आ जाएगा, आपको लिंक आ जाएगा। आफ्टर एवरी चैप्टर इज ओवर यू टू अपलोड इट इन अ मोबाइल ऐप और लैपटॉप, वेरेवर यू वांट टू डू इट। सिंगल पीडीएफ बनाने का कुछ नहीं, ऑफ एंटायर नोटबुक ऑफ दैट चैप्टर, एंड विल वेरीफाई योर प्रेजेंटेशन, will verify whether you are solving all the questions or not, and notorious students will get wonderful remarks. ये remarks आपको खुद यहाँ पे भरने हैं। remarks मतलब don't write too good, ये उसके लिए नहीं लिखा है, ये स्कूल जैसा रिमार्क नहीं है। बच्चों को जो स्कूल का आदत रहे ना, आई वॉन्ट स्टार, हाँ तो स्टार 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 करेंगे ऐसे, इसके लिए नहीं है। रिमार्क मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं या एडिशनल टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, यू कैन राइट इट हियर, यू कैन राइट इट हियर, लाइक टेस्ट विल बी देयर इन एडिशन टू दिस क्वेश्चंस। तो लिखो QRM सीरीज सॉल्व करो, Q सीरीज एटलीस्ट यू मस्ट सॉल्व कंपल्सरीली प्रॉपरली। R सीरीज में चलो थोड़ा बहुत आपने शॉर्टकट मार लिया, प्रेजेंटेशन चलेगा। वर्किंग नोट्स आर मैंडेटरी। आई डोंट हैव टू गिव these instructions again for any of the chapters. Time limit after the entire chapter is over, I'll give 2, 3, 4 days depending on the length, मतलब number of questions for you to upload. 3-4 दिन के बाद वो लिंक गायब हो जाएगा, you will not be in a position to upload. I'm going to set a timer. वो टाइम के अंदर रीजनेबल टाइम मिलेगा आपको, डोंट वरी, रीजनेबल टाइम विल बी देयर टू फिनिश अप। तो उस टाइम के अंदर आपने नहीं किया नहीं होगा, और ये सब कुछ आप करोगे, हम बोलेंगे अब की बार 70 के पार, हाँ 70% रिजल्ट होता है। पब्लिक को ताली बजाना के भी समझता नहीं दे रही, हाँ आराम से 70% ला सकते हैं, आराम से। क्यों? मेरे पास क्रिएटिविटी है, इंस्टीट्यूट उतना क्रिएटिव क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं निकलता है, पेपर्स आर कंपैरेटिवली इजियर। आई सी आपको ये डिबेंचर, आई कुड हैव जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट स्वीट 15 minutes. I would not explain you what is FIFO-LIFO. I would not explain you what happens for income tax. I would not explain you what are the transaction costs. I would not explain how the long-term bonds are there, or what happens with the malkail, or what happened with the variable rate. Discussion कितना शॉर्ट बन गया होता, 15-20 मिनट का है। क्या इसके अंदर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ डिवेंचर आता कहां से, आई डोंट एक्सप्लेन। YTM क्या करना है तुमको, बट दैट इज द रियल लाइफ। व्हेन यू गो टू रियल लाइफ, बॉस ये सब चीजें बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड है, तो आपको ये फिलअप करना है, ऑप्शन आपके पास नहीं है। जो बच्चे ये करेंगे कंसिस्टेंटली, मैं बेट लगा के बोलता हूं उन बच्चों में से 70% पास हो गए। जो करेंगे नहीं उसके में से 70 कहां से, मैं उनके लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल हूं? Those who are not going to follow, I am not responsible. Obviously, because if you are not going to do it, you are going to keep a backlog, and then this is और pressure आ गया, टेंशन आ गया सर। प्रेशर आके गया क्योंकि तूने बहुत सारे टाइम तक उसको होल्ड करके रखा था। Come down to question number, what number I told you, P3। तो क्या करना है बच्चों अब की बार, 70 के पार, 70 से आगे जाओ। 100 तो मेरे को लगता नहीं कभी जिंदगी में होगा। We go to question number पुणे 3, P3। यहां पर भी नोटबुक का पेज नंबर लिख सकते हैं आप, या इंडेक्स में लिख सकते हैं, wherever you want। Mr. Ramesh furnishes the following details of his investment in government bonds।
6% government bonds of rupees 100 each. What is 100 rupees? Face value. 6%, what is it? Coupon rate. 1st Jan 2010. तो बच्चों normally accounting year starts with April. In reality, in CA exams, अपनी मर्जी 1 जान से शुरू है. So year is January. Opening balance. Face value is 60,000. Cost is 59,000. मतलब he has bought the debentures at 59,000. अब बोलेंगे कैसे? फेस वैल्यू 60 है. कहां पे बोला मैंने कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू? इसलिए कल उर्दू में बोला था, interest rates or expectations, if they go up in the market, price will come, price could go below face value, price could be above face value. So his cost is how much? 59,000, but the face value of the debentures is, so he will receive interest on 60,000. What is this 59? Cost. Cost मतलब ये क्या होगा? X interest price plus, तो ये डिबेंचर उसने खरीदे थे. कितने डिबेंचर उसके पास? 600. 60,000 is a face value divided by 100 face value of one debenture. So the number of debenture that he has is 100 units purchase on 1st March. X interest 98. चलो गया CA कोर्स. Purchase at what? X interest. हमारा ससुर बैठा है उधर X interest पे देने के लिए. स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमने देखा उधर था क्या बाइफर्केशन? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, सिलेक्ट. अमेजन का वेबसाइट है ये. सिलेक्ट दिस. 1st जुलाई सोल्ड 200 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, मतलब आउट ऑफ इनिशियल परचेस. फीफो. कुछ समझा क्या? फीफो वैसे सोल्ड कुड बी आउट. सी मेरे पास है कितने? ओरिजिनल 600 है, प्लस मैंने परचेस किए थे 100. हाउ मच आई हैड? Out of 700, how much did I sell? 200. So I could have used weighted average also, na? If examiner is silent, we will use, but examiner is vocal here. Sold out of original holding, not Michael holding. वेस्ट इंडीज का एक बॉलर था. छोड़ दो. P4 नीचे लिखा भी है. 1st अक्टूबर परचेस कम इंटरेस्ट. देखो अभी दूसरा ससुर आ गया इसका. ऊपर एक्स इंटरेस्ट पे खरीदा था, अभी कम इंटरेस्ट पे खरीदा. 1st नवंबर सोल्ड 200 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, दैट इज फीफो. चल रहा है. इंटरेस्ट ड्यू डेट आर 30 सितंबर एंड 31st. हो गया प्रॉब्लम. क्यों? योर ईयर एंडिंग इज जान टू डिसम्बर. योर ईयर इज जान टू डिसम्बर. कहां पर है आपका अकाउंटिंग ईयर? जान टू डिसम्बर है ना, बट इंटरेस्ट पेमेंट डेट इज व्हाट? सितंबर एंड मार्च. डू द मैच. Ramesh closes his books on 31st December. Show how investment account will appear in his books. Brokerage is 1% to be paid on each transaction. Market value on 31st December 2010 is 95. क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं. Pass journal entries also. Right now I'll pass journal entries first. Now first I'll pass journal entry. लेक्चर बनाएंगे यार उसके बाद. Ledger is very easy if you can get the journal right. तो जर्नल आता है तुमको? तो बॉक्स बनाने का प्रॉब्लम नंबर P3. In exam normally they don't ask a journal for this chapter. They don't, but I am asking you. In books of Ramesh, journal entries. Put up the format. Date, particulars. You can draw lines if you want. Not interested in investing my time in drawing lines. इतना ड्रॉ कर लिया बस हो गया. You should present it properly. आपका डेबिट में रहना चाहिए. Shall I start? Okay. As a
trick to solve the questions and avoid mistakes. You must identify different dates. Many students forget interest date which comes up in between. Interest का transaction दिया ही नहीं question में ना. This question say interest received. No, it is deemed to be received ना. What is the due date? 30th of September. तो मतलब ये 1 जुलाई होने के बाद you should not go to 1 अक्टूबर. इसके बीच में 30 सितंबर है. 30 सितंबर को क्या हुआ आपको? इंटरेस्ट मिला. इधर 1 मार्च के बाद डायरेक्ट 1 जुलाई को नहीं जाने का. बीच में 31 मार्च है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिला होगा ना. तो यू शुड नॉट फॉरगेट द एंट्रीज ऑफ interest received. You understand that? And you should also not forget the interest accrued but not due. In this question, you have interest accrued but not due. Why do you have interest accrued but not due? Question में देखो ना, due date क्या है interest की? Due date क्या है interest की? September and March. Clear है क्या? September and March is a due date of the interest. But your accounting year ends on what? 31st December. So, I'm starting with 1st Jan 2010. Opening balance के लिए entry नहीं होता. Journal entry नहीं होता opening balance का. Opening balance is brought forward or brought down. There is no journal entry for that. But interest के लिए entry करना पड़ेगा मुझे, accrued के लिए. Imagine now. Listen up. मैं purposefully working out कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है. We'll require about 1.5 page for journal entries. I can write this working as a part of journal entry in the narration part, but first question है इसलिए मैं आपको proper working out करके दिखा रहा हूँ. And this question I am solving as a journal. Exam में आपको सिर्फ क्या present करना है? Ledger. What I am identifying? Interest accrued but not due. Interest accrued but not due. के अंदर A as on 31st December 2009. That is end of the last year or beginning of the current year. Which year are we recording, बच्चों? अरे which year are we recording? 2010. So what was the last year? 2009. Right? Now listen up carefully. Public, can you hear me? Don't write. What is this? Timeline. अरे जरा जल्दी से रिस्पॉन्स देना सर. 30 September 2000 and 31st March 2010. कंपनी बोलता है हम 30 सितंबर को तुमको इंटरेस्ट देंगे और 31. अब ये जो पूरा पीरियड है 6 महीने, इस 6 महीने का इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? 31st March 2010. On 31st March 2010 you will give interest. And here in between there is a 1st Jan 2000 or 31st December 2009, whatever you want to say. 31st December लिख दो अभिषेक, बाद में डाउट पूछेंगे सर. These 3 months, these interest is accrued but not due. As on 31st December interest accrue हो चुका है ना. ये कौन से साल का इनकम है? ये जो इंटरेस्ट है 3 महीने का. This is the income of. This is the income of 2009. This will be income of बोलो 2010. बट आपको 31 मार्च को पूरे 6 महीने का मिलेगा ना. तो हम करते क्या है सुनो. 31 दिसंबर 2009 को हम इंटरेस्ट रिसीवेबल दिखाते हैं. बट इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल वी आर यूजिंग अ फैंसी वर्ड. व्हाट इज अ फैंसी वर्ड? Interest accrued but not due, which is our asset. So I will pass an entry, interest accrued but not due, account debit to interest on investment, which is the income of the last year.
है ना? कितने डिबेंचर्स थे आपके पास? 60,000 फेस वैल्यू इंटू 6% है ना इंटरेस्ट रेट इंटू 3/12. Let me do in number of months rather than number of days. Answer 900. What is 900? Interest accrued but not due. 900 rupees है, which is your income. Last year में मैं इसको asset करके दिखाऊंगा. Interest accrued but not due account debit, which will be shown in the balance sheet as an asset. And interest on investment I will show as a income of the last year. Am I right? अब current year में मैं उसको reverse करूंगा. In the current year, entry will be reversed. Observe why. बच्चों please सुनो. Entry on 31st December 2009 will be, just आपको लिख रहा हूं यहां पर, interest accrued but not due, not mountain due. एक काम करते हैं, अकाउंट शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, interest accrued but not due. How much? 900 to interest account 900. है ना? ये 31 दिसंबर को मैंने एंट्री पास किया, 900 रुपए का मैंने इनकम बुक कर लिया और असेट दिखाया. दिस विल गो टू असेट साइड. दिस विल गो टू असेट साइड. दिस इज असेट, राइट? एंड दिस इज माय इनकम. अब मैं एक 1 Jan 2010 को इस एंट्री को रिवर्स करूंगा. एंट्री क्या करूंगा मैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू 900, है ना? Assume करो there is no more transaction, no purchase, no sale. Assume 31st March 2010 I will receive interest on all the 600 debentures for 6 months. Bank account debit 1800 to interest account 1800. बोले 1800 कैसे? 6 महीने का आएगा ना उस टाइम पे. 31 मार्च को मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. अरे बच्चों मैजिक हो गया है. कैसे? देखो, this is the year 2010. In 2010 I credited interest by 1800 and I debited interest by 900. अगर आपने ऑब्जर्व किया, नेट इंटरेस्ट 900 से क्रेडिट हो चुका है और यहां पर 2009 में इंटरेस्ट क्रेडिट इज also 900. So what I did, this 1800 has got split between what? 2 years. Now examiner is not asking you journal entries of 2009. He's asking you journal entries of only 2010. बट ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन किया. समझा क्या तुमको कुछ? एवरीवन, कारगटे, हैव यू अंडरस्टूड? Yes. Anyone has a doubt here? Are you clear? So I'm going to pass an entry of 2009 or 2010. 2010 में what do we do? We reverse the entry of the last year. So shall I go up? ये लिखा क्या तुमने? नहीं, क्या आचार डाल रहे थे? जल्दी लिखो. क्या बोला था मैंने? लिखो अब. Yes. They're fixing it. I don't know. They're checking it. I am not the expert on this. So, anyone has a doubt on this?
डाउट नो। तो कम आप जर्नल एंट्रीज में आ जाओ। 1 Jan 2010 I will pass a entry, interest on investment account debit, interest on investment account debit 900 to interest accrued but not due account, but not due account। 1 January का एंट्री रिपीट प्लीज। इट इज रिवर्सल ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में दैट इज 2009 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ था, तो आई पास एंट्री इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, शॉर्ट फॉर्म टू इंटरेस्ट। आई शोड इट एज माई इनकम ऑफ द लास्ट ईयर बट आई नीड टू रिवर्स इट। ये जो एंट्री है ना, इसको रिवर्स किया है यहां पर मैंने। क्यों रिवर्स किया? देखो सुनो सुनो सुनो, ये रिवर्स इधर किया मैंने। यू डोंट वांट टू रिवर्स ना, एक काम करो तो ना, इसको इग्नोर करो तुम 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इग्नोर करो ये एंट्री को। अब ये जो 1800 आया, इफ यू डोंट पास दिस एंट्री, इफ यू डोंट पास दिस एंट्री, ये वाला एंट्री तुमने अगर पास ही नहीं किया, चल चल तुमने पास ही नहीं किया, कौन है ये मैडम? निधि। निधि, अगर वो एंट्री तुमने पास ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा? 31 मार्च को इंटरेस्ट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पूरा का पूरा 1800 रुपया उस साल का इनकम दिख जाएगा। 1800 रुपया 2010 का इनकम दिखेगा बहन जी। 1800 रुपया 2010 का है क्या? 1800 में से 900 पिछले साल का है, तो पिछले साल का तुमने बुक कर लिया। लेकिन अगर तुमने पास नहीं किया तो नेट इंटरेस्ट कितना दिख जाएगा? ये लिखो मत, गलत है। नेट इंटरेस्ट 1800 क्रेडिट हो जाएगा बहन जी, ये नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एंट्री को रिवर्स करते हैं। अगर रिवर्स नहीं करना है तुमको तो तुम एक काम कर लो, तुम क्या करो, इधर है ना, तुम ऐसा कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट 1800 टू इंटरेस्ट अकाउंट 900 टू इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू 900। क्यों बहन जी? ये जो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू को आपने डेबिट किया था, उस अकाउंट को क्रेडिट भी किया करो ना कभी तो वो क्रेडिट मैं अब कर रहा हूं, बट ये तुम भूल सकते हो ये ऐसा करने के लिए। इसलिए मैंने तुमको एक मैकेनिकल रूल लिख के दिया। क्या रूल बोला मैंने? वॉट एवर एंट्री यू पास एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, यू रिवर्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर interest account debit to interest accrued but not due. And when you receive the interest, don't ask a question for which year did you receive the interest. Just pass entry bank account debit to interest account 1800। बहन जी समझा क्या आपको? So that is why we do it. Are you clear with the first entry? Being interest accrued reversed। कुछ तो लिखना है इसलिए लिखना होता है। नरेशन तुम कुछ भी लिखते जाओ रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन। 1 Jan का ये हो गया। 1 Jan का जो ओपनिंग बैलेंस है उसके लिए कोई एंट्री नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए एंट्री नहीं होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ? देखो 1 मार्च को ट्रांजैक्शन हुआ ना, है ना? क्या हुआ 1 मार्च को? परचेस किया ना तुमने, है ना? ब्रोकरेज है क्या यहाँ पर? हाँ, ब्रोकरेज नीचे अलग से दिया है 1%। नाउ लॉजिकली ब्रोकरेज शुड बी ऑन कम इंटरेस्ट प्राइस। दिए एग्जाम्स में जो भी प्राइस क्वेश्चन में दिया रहेगा ना उसके ऊपर हम ब्रोकरेज निकालेंगे। आई नो दिस इज पथेटिक, आई हैव नो चॉइस। इंस्टीट्यूट ने कहीं पे भी क्लियरली लिखा ही नहीं, लेकिन उनके कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने जो प्राइस दिया 98 दिया ना, 98 के ऊपर ब्रोकरेज निकला है।
जबकि ब्रोकरेज निकलना चाहिए कम इंटरेस्ट पे. बट क्वेश्चन में अभी क्या लिखा है? 100 यूनिट्स परचेस एट एक्स इंटरेस्ट. हाउ इफ इंस्टीट्यूट कैन प्रूव टू मी आई विल सरेंडर माई डिग्री which they had already taken back once. I don't care. मतलब डिग्री से मेरा मतलब मेरे ससुर जी ने मेरे को पूछा था, मैं बीकॉम नहीं था ना, तो मतलब तुम बीकॉम नहीं, उनको लगा कि मैंने कुछ लफड़ा फिड़ा किया होगा कॉलेज में, इसलिए मेरे को कॉलेज से निकाल दिया होगा. मैं बोला आप अभी लड़की दोगे नहीं दोगे ये आपका चॉइस है, बट मैं तो ऐसे भी लेके जाऊंगा. तो चॉइस वाज डिफरेंट. अबे यार मतलब तुम बीकॉम बीकॉम नहीं है इसलिए. अबे फिर उन्होंने बाद में बोला नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब तुम्हारा मतलब तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया हरकत है, तो इसलिए तो तुम्हारा मतलब ऐसा तो बोला, ऐसा कुछ किया नहीं हमने. 98. तो कम डाउन 1st of March 2010. देखो 1st March ओके, इसके लिए टेबल बना दे एक. वर्किंग नोट 2 transaction details. All transaction details, we'll write it here. Date. Now quantity और face value is better. Quantity मत लिखो, better है. Face value, number of months for which the interest is accrued, just like number of months. Expect silence. X interest amount, accrued interest, कम इंटरेस्ट अमाउंट, और 2 कॉलम है. ब्रोकरेज, it's not 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 brokerage. You people would have grown watching 𝐓𝐡𝐚𝐧. What was 𝐓𝐡𝐚𝐧 at that time? 1 2 3 4 मल्टीपल वर्जन है ना उसके. लास्ट जिनको समझा नहीं इट्स ओके. लास्ट कॉलम कम इंटरेस्ट प्लस माइनस ब्रोकरेज. तो पैसा तुमको मिलता है या पैसा पे करना पड़ता है वो उतना होता है. लेट मी एक्सप्लेन. कैन आई स्टार्ट? Date, face value, number of months. These are basically details of a particular transaction. Can I start? और हमने ट्रांजैक्शन कब किया है? 1st March. डेट ओके. परचेस के ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा लिखो परचेस. परचेस इज हेडिंग एंड नीचे सेल के ट्रांजैक्शन. 2-3 लाइन छोड़ना, ज्यादा लाइन नहीं छोड़ना. Hardly 2-3 transactions of purchase and 2-3 of sales. We will digest all the transactions. Let me just explain one transaction. Purchase. डेट क्या रहे? 1st March 10. 1st March 10. फेस वैल्यू कितना है? परचेस कितने किए? 100 यूनिट्स तुमने परचेस किया. डोंट से 100. 100 into 100. टोटल फेस वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज 10,000. ट्रांजैक्शन का फेस वैल्यू 10,000 है ना? डू यू अंडरस्टैंड 10,000? नाउ हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट इज accrued? Listen carefully. Many students make a blunder. They take interest accrued from 1st January. रे बेवड़ो, I did not say from the beginning of the year till the current date. कल मैंने उर्दू में लिख के दिया था, पढ़ो उर्दू, तुम्हारे नोटबुक में लिखा होगा तुमने. Interest accrued is from last interest payment date till the date of transaction. Last interest कब पे किया था? अरे लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने पे कब किया था? 30 सितंबर को. 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे हुआ है क्या? नहीं. तो तब से लेके आज तक इंटरेस्ट अक्रूड है ना. तो कैलकुलेट हाउ मेनी मंथ्स. 5 मंथ्स आर देयर. कैसे 5 मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब. मार्च नहीं ऐड करना है. कुछ लोग 6 कर रहे थे, वो मार्च ऐड कर गए. 1st मार्च हो.
महीने, इफ यू कैन नॉट काउंट मंथ्स, you'll have huge problem in your life. So 10,000 5 months. आधे लोगों को वो भी नहीं समझा. Take on your calculator. Which price is given in the question? Now the price whichever is given in the question you write. Which price is given? X interest. But per transaction दिया, per debenture दिया. 98 into 100. 9,000. Which column I wrote 9,800? X. समझा ना? ब्रोकरेज में इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेगा. कौन सा प्राइस दिया ससुरे ने? 9,800 का 1%. 98. 1% दिया ना यार क्वेश्चन में, पढ़ो ना. You don't need a calculator for this. Accrued interest. Calculate accrued interest. Calculate accrued interest. Let me check accrued interest. Type in chat box quick. $750. वाह रे वाह देशपांडे. 245. 240. 245 कौन था? क्या मार्केट यार, कैसे है? एक मिनट ना. ये मार्केट एड ने क्या किया मालूम है क्या? 9,800 पे इंटरेस्ट निकाला इसने. है ना मार्केट एड? अरे है ना. हाँ. यही चीज मैंने बोला था 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले. इंटरेस्ट इज ऑन फेस वैल्यू, नॉट ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस. मैंने बोला बाजू वाला कॉलम लेंगे बच्चे. ठीक है अपने सामने. तो अकेले नहीं, इधर बहुत सारे हैं तेरे दोस्त भाई बहन. आई होप ब्रदर सिस्टर्स ओनली. देखो ना कैलकुलेटर. 10,000 इंटू 6% इंटू 5/12. 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है. इंटू 5/12. 250. कम इंटरेस्ट प्राइस इज 10,050. तो जिस आपने डिबेंचर खरीदे, कम इंटरेस्ट प्राइस इज 10,050. वो तो पे किया ही किया, प्लस ब्रोकरेज पे किया. 10,148. ये टोटल आपने पे किया. चेक करो, समझाएगा तुमको ट्रांजैक्शन. चेक चेक चेक. देशपांडे 1,500. अरे देशपांडे काय झालं काय तुम्हाला? हाँ 1,500 रुपये आंसर. पहले उसने 750 दिया, फिर नहीं वो दूसरा देशपांडे था क्या? नहीं वही देशपांडे था. तो 1,500 इंटरेस्ट इज ऑन फेस वैल्यू 10,000. उस ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कितना है, समझा क्या? सुनो बच्चों, वापस 10,000 फेस वैल्यू जो डिबेंचर खरीदे उनका. 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ था. सर हाउ 10,050 सर? सुनील जी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू. 9,800. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, प्रिंटेड इन द क्वेश्चन. 98 into 100. अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करने के बाद कम इंटरेस्ट आता है. 10,050 कैसे पूछ रहा है बच्चा? सुनील जंगीर जी समझा आपको? 10,050 9,800 प्लस 250 इज एक्स प्लस अक्रूड इंटरेस्ट इज कम इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज. वाई प्लस ब्रोकरेज? परचेस है ना. सेल के केस में माइनस करेंगे. तो आपने डिबेंचर खरीदे कितने में? यू पेड 10,148. हाँ बट उसमें अक्रूड इंटरेस्ट कितना छुपा हुआ है? 250. कम डाउन, सॉरी कम अप. एंट्री लिखते हैं इतने. लास्ट एंट्री आज के लिए. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. Investment account debit. What all you debit to investment account? Your X interest price plus brokerage. 9,800 plus brokerage 98. और जो इंटरेस्ट पे किया तुमने, we debited to interest on investment account. कितना पे किया तुमने? 250 पे किया ना. You paid 250 to what? बैंक अकाउंट. परफेक्ट. उतना टोटल आएगा 10,148 था ना रे. Being
being what? Investment purchase. Check करो समझाएगा transaction. It's okay. You ask your useless doubts, huh? Absolutely no problem. I'm gonna ask. Sir, can you share a PDF of class book? Yes, beta. I'll share. These all the PDFs will also be uploaded onto app. I'll upload them onto the app also. App का access भी आपको मिलेगा. Sir, lectures कब upload हो जाएंगे? By tomorrow, lectures uploading will be regular after within 10-15 minutes because I need to add the students, and that is why I told you जिनका admission pending है, admission जल्दी ले लो because I need to create a batch onto the platform and load the students there. But अपना public जो है ना time ही नहीं करता. That is why the uploading is pending. That's why I sent a message today. So I sent a class book. So I'll give you access of all the lectures and the PDF out there on your email address which you provided at the time of admission. Right? Remaining transactions we do it tomorrow.